Hello friends, the last video of this experiment, frequency versus stopping potential, okay? Frequency versus stopping potential. For a better understanding of what is happening, we again write the equation of photoelectric effect. That is what? That is, total energy of photon is divided into two parts. The first part is used to knock the electron out and the second part becomes the kinetic energy. Okay, I can rewrite this equation like this. Total energy of photon is equals to the work function and the kinetic energy of the electron is equal to the energy given to the electron to stop it. So here I am writing EV0. Okay, I am keeping the intensity of light constant. All the other factors will remain constant. What is happening? I will change the frequency and I will note the स्टॉपिंग पोटेंशियल. यहां पर जो इंसिडेंट लाइट आ रही है मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊंगा और उसे रोकने के लिए यहां से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो नेगेटिव पोटेंशियल मुझे चाहिए, उसकी वैल्यू नोट करता जाऊंगा. ठीक है ना. चलो फर्स्ट आते हैं मेटल ए के ऊपर. लेट अस डिस्कस फॉर मेटल ए. मेटल ए कहां पर होगा? मेटल ए विल बी एट दिस प्लेस. एट दिस प्लेस आई हैव गॉट मेटल ए. नाउ द फ्रीक्वेंसी, the photon of a certain frequency are falling on this, लेकिन वो frequency अभी threshold frequency से कम है. The incident frequency is smaller than threshold frequency. So what will happen? Will any electron emission take place? No. So if there is no electrons that is coming out, what is the value of stopping potential? 0 होगा तो भी चलेगा. So if the particular frequency is smaller than the threshold frequency. What is the threshold frequency for metal A? I have written it is nu 0A or nu naught A. Okay, frequency is less than this. Any stopping potential required? No. Again increase the frequency by a small amount, but it is still less than the threshold frequency. तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, उसको रोकने के लिए कोई पोटेंशियल नहीं चाहिए. तो यहां से यहां पे आए तो फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टिल रिमेन्स 0. नाउ सी द मोमेंट यू गिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू दिस. ठीक है, आपने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अब कितनी कर दी है? इसको एग्जैक्टली कर दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर. यानी कि the amount of energy that is given to the electrons is exactly equal to the work function. समझ में आई बात? फ्रीक्वेंसी को कितना करना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर. अच्छा, ये दोनों इक्वल है. क्यों इक्वल है? व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी. Work function, the minimum energy required to kick out electrons, that is W0. What is threshold frequency? It is the minimum frequency that is required to kick out electrons. And when you multiply that threshold frequency with H, what does it become? It becomes threshold energy. तो आप इसको threshold energy बोलो या work function बोलो, दोनों एक ही चीज होती हैं. तो when your frequency is exactly equal to threshold frequency, the electrons will just come out. कितनी एनर्जी दी है आपने इलेक्ट्रॉन को? सिर्फ बाहर निकल जाए उतनी एनर्जी दी है. ठीक है ना. बाकी जो ये सेकंड पार्ट होता है इसका, ये अभी खाली है. ओके, सो सपोज दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट. The total energy of photon is consumed in kicking this electron out. So will there be any energy left with this electron? क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास में कोई एनर्जी बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी. So is there any stopping potential required to stop it? No, because it is already stationary. Clear? So what is the stopping potential for threshold frequency? It is exactly equal to 0. All right. यहां पे क्या आएगा? यहां पे जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, द पोटेंशियल ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल is exactly equal to 0. So this point will lie again on y axis. Now अभी आप क्या करो? एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा दो. Let us come back to that. Suppose the work function was 3. Previously ये भी 3 था. Kinetic energy कितनी थी? 0. ये कौन सा केस है? ये वाला केस है. Now if you increase this will be 4. This will become 1. यानी अब आपको थोड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे चाहिए, लगाना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ताकि वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए. क्लियर?
सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गोइंग टू इंक्रीज, ग्राफ आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा. इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, increase the frequency, increase the energy. This becomes 5, work function will remain 3, this will become 2. Abhi electron ki energy it has increased, so you require more potential to increase to stop it. Okay, now you make it 7, so this is 3, this will be 4. देखो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपको उसे रोकने के लिए एनर्जीज और देनी पड़ेंगी. ओके, and how is this variation between this number and this number? The variation is linear variation, so the graph is also a straight line. Okay, now repeat this experiment with metal B. अभी हमने यहां से metal A को हटा दिया and now I am placing metal B over it. What is going to happen? Now the work function of metal B is different than metal A. इसका कितना लिया था हमने 3, तो metal B का कोई भी hypothetical आप ले लेते हैं 5. Okay, when the incident frequency is equal to threshold frequency of metal B, then again what is the energy given? It is 5. आपने कितनी एनर्जी दी है? एग्जैक्टली उसके वर्क फंक्शन के बराबर जितनी एनर्जी दी है. सो इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू कम आउट, बट इट विल बी एमिटेड आउट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल नॉट मूव. नो पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट. सो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल बी ऑल्सो दिस विल बी एग्जैक्टली एट y axis. नाउ एज यू इंक्रीज दिस, इसको आपने कर दिया 6, यहां पे आ जाएगा 1, सो यू रिक्वायर लिटिल ग्रेटर पोटेंशियल टू स्टॉप इट. फिर इसको बढ़ा दो, इसको आप कर दो 7, यहां पे कितना आ जाएगा 2. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसको रोकने के लिए आपको पहले से ज्यादा पोटेंशियल चाहिए यहां पे. अभी इसकी एनर्जी को कर दो आप 8, दिस विल बिकम 3. नाउ व्हाट इज हैपन? द एनर्जी ऑफ फोटोन हैज इंक्रीज्ड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो इंक्रीज्ड, सो रिक्वायर ग्रेटर पोटेंशियल टू स्टॉप इट, एंड दिस इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन. Okay, now compare the graphs of metal A and metal B. They have different threshold frequencies, but the slope of metal A, the slope of metal B, and take my words for it, the slope of any metal, अगर आप बोलो कि भाई सर मेटल C के साथ इसको करो तो क्या होगा? अगर मैं कोई तीसरा मेटल A और B के बाद में यहां पे C भी ले आता हूं, then here metal C will have a different threshold frequency, but the slope of this will again remain same. कोई भी मेटल बनाओ, कोई भी मेटल यहां पे एमीटर की जगह पे आप लगा दो, they will have different threshold frequencies, but the slope of all the graphs will remain same. You have to think about it. Why does this happen?